my dear kids. How are you? Hope you are good. I am back with lecture 3. So let us quickly proceed with extreme zeal and energy. So today's topic is the first law of motion. We have to continue. And from where we have to start? Relation between inertia and mass. Right? This all we have discussed in the previous lecture. You can refer to it if you want to revise. So before starting today's topic, that is inertia and mass, I'll ask a simple question. अगर there's an elephant and there's a human and आपको दोनों को displace करना है, both are at rest, ठीक है, दोनों को हिलाना है, दोनों को motion में set करना है, which will require greater force? चलो, very simple question. एक elephant है, एक human है, दोनों को आपको motion में लेके आना है, both are at rest. किसे ज़्यादा force लगेगा? Obviously, elephant को motion में set करने के लिए ज़्यादा force लगेगा. Why? Can you answer that? Elephant heavy होता है. Simple answer. Because the elephant is heavy, it has more mass. That's why it requires greater force to change its state. है ना? So what is the relation between inertia and mass? Inertia of a body is directly proportional to the mass of the body. अभी हमने देखा through an example कि जितना ज़्यादा mass उतना ही ज़्यादा inertia. Elephant has more mass. That's why elephant can resist changes better. Inertia क्या होता था? Resistance to change in state of motion. Right? तो जितना ज़्यादा inertia उतना ज़्यादा resistance. और inertia कब ज़्यादा होगा? When the mass will be more. Inertia is more. Right? So see, there's an elephant and there's a human standing there. Showing you the example. Momentum. What is momentum? Quantity of motion possessed by a moving body is known as momentum of the body. कितना motion? How much motion is the body possessing? कितना motion है किसी body के पास? To know that, you have to know the momentum. Momentum is a new word. It is denoted by P. And it's a vector quantity. It has direction as well. अभी पता चलेगा कि direction कैसे है. Let's see the example. Yes. Consider the two orange balls. Bright colored orange balls. एक बड़ी है एक छोटी है. You can clearly see that. So let's see, one has mass m1 और एक का mass है m2. किसका mass ज़्यादा है? Obviously m2 का mass ज़्यादा है. The ball is larger, तो mass ज़्यादा होगा. ऐसा है? Heavy ball है. ठीक है? So m2 is greater than m1. अब ये बताओ, if both are moving with the same speed, that is velocity. एक second, just a second. Oh, mistake. चलो कोई बात नहीं. If the velocity is v and this also has the velocity v, दोनों की velocity is same. Mass is different. I have already told you m2 is greater than m1 and you can also see that. Velocity दोनों की same है. दोनों को same velocity से they are rolling on a floor. Now tell me which will require greater force to stop. You want to stop both the balls. तो किसको आपको force ज़्यादा लगाना पड़ेगा? Obviously, जो ball heavy है, that will require greater force. है ना? That means inertia is directly proportional to mass. We have already concluded that momentum is the quantity of motion. तो motion ज़्यादा कौन करेगा? Velocity is same, mass is different. जिसका mass ज़्यादा उसका momentum भी ज़्यादा. So we can simply conclude that P, which is momentum, is directly proportional to mass of the body. है ना? Momentum ज़्यादा होगा
क्योंकि मास ज़्यादा है, यू विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप दैट बॉल, इसीलिए द मोमेंटम इज मोर. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. देखो अब आ गई सुंदर सुंदर दो ब्लू बॉल्स. मास इज सेम, यू कैन सी दैट. समझ में आ रहा है देखने से ही दैट द मास इज सेम. वी आर कंसिडरिंग इट m. ठीक है. स्पीड इज डिफरेंट. In the previous example, the mass was different and the speed was same. In this example, the speed is different. One has v1 and the other ball has the speed v2, or better say velocity v2, because we have already discussed that momentum is a vector quantity. Direction भी होगा. Speed does not have direction. Velocity has direction. So velocity consider करते हैं v1 and v2. v1 is greater than v2. अब बताओ फोर्स ज़्यादा कहाँ लगाना पड़ेगा? You have to stop both the two balls. And now you have to tell me कि फोर्स ज़्यादा कहाँ लगाना पड़ेगा. स्पीड ज़्यादा तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. फुटबॉल अगर तेज़ी से आ रही है तो गोलकीपर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप दैट बॉल, है ना? तो v1 ज़्यादा है v2 से, तो फोर्स ऑन द बॉल विद वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन द बॉल विद वेलोसिटी v2. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इफ द स्पीड इज मोर द मोमेंटम हैज टू बी मोर. इफ द बेटर से इफ द वेलोसिटी इज मोर द मोमेंटम हैज टू बी मोर. इफ the mass is constant, provided that the mass is constant, the momentum is directly proportional to velocity of the body. Let us conclude that momentum is directly proportional to velocity of the body. Pardon for bad handwriting, it's okay, but I hope you can understand every concept. That first of all, we concluded that momentum is directly proportional to mass of the body. Momentum is directly proportional to velocity of the body, provided that the mass is same. बताओ conclusion क्या निकला? Momentum of a moving body is proportional to mass of the body and the velocity of the body. दोनों पर डिपेंड करेगा. Momentum, what is the formula for momentum? Mass into velocity, that is clearly mentioned over here. ठीक है, अब एक ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से. So since momentum is directly proportional to mass and momentum is directly proportional to velocity, ये बात क्लियर? तो if they are directly proportional, ग्राफ कैसा बनेगा? It will be a straight line. चाहे momentum और mass के बीच में बना लो, चाहे मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में बना लो, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ बना लो या मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बना लो, बोथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. बेटा एम ठीक है. We'll see the units now. Momentum equals to mass into velocity, discussed before. Mass की unit kg, velocity की unit meter per second. दोनों को multiply किया, unit of momentum is there. kg meter per second is the SI unit, standard unit for momentum. कुछ नहीं किया, mass की unit ली kg, velocity की unit मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एज पर फॉर्मूला, बस बन गई. फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, मास एंड वेलोसिटी. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. मास बढ़ाया, मोमेंटम बढ़ गया. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहे, मास बढ़ाया तो मोमेंटम बढ़ गया. मास घटाएंगे तो वेलोसिटी नहीं, मास घटाएंगे तो मोमेंटम घट जाएगा, राइट? प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी सेम वेज वैरी करेगी. वेलोसिटी बढ़ी, मोमेंटम बढ़ जाएगा. वेलोसिटी घटी, मोमेंटम घट जाएगा. इफ द मास इज
constant. So here I am going to end the lecture. Okay, don't forget to like, share and subscribe. Keep waiting for my next lecture. Bye bye. Take care and keep studying.